Hi everyone, this is Imran Bhagwan. In today's video, we will see the remaining question of lesson number 7 of class 7, and the name of lesson is motion, force and work. This is our second lecture, okay? And the answer of first three questions of this lesson I had explained in the first video. So in this video, we will see how to solve the remaining questions, okay? So question number 4, a bird sitting on a wire flies, circles around and comes back to its perch. Explain total distance it traversed during its flight and its eventual displacement. Okay. So what is asked in the question? It is said in the question, एक वायर के ऊपर एक बर्ड बैठी थी, वो अपनी पोजीशन से उठकर एक फ्लाइट करके वापस अपने पोजीशन पे आके बैठ जाती है. ओके, एक सर्कुलर राउंड लेके फिर से अपनी प्लेस पे आके बैठ जाती है. सो हाउ मच डिस्टेंस उसने ट्रैवल किया, कितना डिस्टेंस उसने ट्रैवल किया और डिस्प्लेसमेंट उसका कितना हुआ. ओके, तो कंसीडर कीजिए कि ये उसका इनिशियल पॉइंट है, पॉइंट ए, और वो पॉइंट बी तक वो बर्ड जो है पॉइंट बी तक वो उड़ कर गई. ओके, बट अगेन इट्स कम बैक टू इट्स पर्च, यानी फिर से वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे स्टार्टिंग पॉइंट के ऊपर आ गई. तो उसने कितना डिस्टेंस कवर किया? तो डिस्टेंस, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्टेंस इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन, यानी कितना मीटर का उसने राउंड लिया, कितने किलोमीटर का राउंड लिया, ये नहीं बताया है. बट इट इज सेड दैट इट कम बैक टू इट्स पर्च, यानी वो फिर से अपनी जगह पर आकर बैठ गई, यानी अगेन इट कम बैक टू पॉइंट ए ओनली. व्हाट हैपन, कितना डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया? तो पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में जितना उसका फर्स्ट राउंड का डिस्टेंस हुआ था, ओके, उतना ही डिस्टेंस उसने सेकेंड राउंड में यानी फिर से आने के लिए लिया. ओके, फॉर एग्जांपल 3 किलोमीटर अगर ए टू बी में होगा तो अगेन 3 किलोमीटर वो बी से ए को आने के लिए लगा होगा उसका. यानी फर्स्ट राउंड में पॉइंट ए और बी के बीच में जितना डिस्टेंस है उसका डबल डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया. ओके, देन हाउ टू राइट इट्स आंसर? डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बर्ड इज 2 multiplied by distance between point where the bird was sitting and the point from where it takes a run. Okay, and second we have to find displacement also. Okay, displacement means what? Minimum distance between original and starting and final point. So its starting point and its final point is same, again it's come back to its point, यानी जहाँ से वो बर्ड उड़ा था फिर से वही अपनी पोजीशन पे आके बैठ गया. ओके, यानी स्टार्टिंग पॉइंट जो था उसका बर्ड का वही उसका एंडिंग पॉइंट है. तो स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट के बीच में कुछ भी डिस्टेंस नहीं है, इसके लिए डिस्प्लेसमेंट इज 0. Therefore eventual displacement of the bird is 0 because it's run to its initial. Okay, now second question, explain the following concept in your own words with everyday example. Okay, force, work, displacement, velocity, acceleration and distance. तो सबसे पहले हम फोर्स देखेंगे. फोर्स मीन्स it is any kind of push or pull on a body due to another bodies interact with each other and it is the vector quantity. Example is also given. ठीक है, फोर्स इस किसे कहते हैं? यानी आप किसी किस्म का पुश कर रहे हो या पुल कर रहे हो कोई बॉडी के ऊपर, इट मीन्स व्हाट यू आर डूइंग, यू आर अप्लाइंग योर फोर्स. ठीक है, एंड व्हाट इज द कंडीशन आफ्टर अप्लाइंग द फोर्स? इट शुड डिस्प्लेस्ड, उसका डिस्प्लेसमेंट होता है. अगर आप डोर को ओपन कर रहे हो, there are two types, by pushing or by pulling you can open the door. If you are pushing the door, you are applying the force and after applying the force the door gets displaced, वो open हो जाता है. So it means you have applied a force on that. So force means what? It is any kind of push or pull on a body. Okay, so this is the definition of force. Next one is work. Work is the component of प्रोडक्ट ऑफ कंपोनेंट ऑफ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट. ठीक है, अगर हम सेम एग्जांपल कंसीडर करेंगे, अगर आपने दिस इज द डोर, फॉर एग्जांपल दिस इज द टेबल, ओके, एंड यू हैव अप्लाइड फोर्स ऑन दैट इन दिस डायरेक्शन, देन इन विच डायरेक्शन टेबल विल गो? ऑब्वियसली इट विल गो इन दिस डायरेक्शन ओनली, इन राइट डायरेक्शन. टेबल विल कम हियर. Okay,
आफ्टर अप्लाइंग द फोर्स द टेबल गेट डिस्प्लेस्ड, यानी उसने अपनी पोजीशन चेंज किया, अपनी प्लेस चेंज किया। अगर उसने इतना डिस्टेंस चेंज किया और उसका वेट कितना होगा, यानी जितना फोर्स आपने अप्लाई किया उसके अकॉर्डिंगली उसका डिस्प्लेसमेंट होगा। आपने अगर थोड़ी फोर्स यूज़ की है तो वो जो है कम डिस्टेंस तक डिस्प्लेस होगा, अगर आपने ज़्यादा फोर्स यूज़ की है तो उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो वर्क इज व्हाट आफ्टर अप्लाइंग द फोर्स the object has displaced, it means work has to be done, उसके ऊपर कुछ वर्क हुआ है। okay, the definition of work is it is the product of component of force in the direction of displacement and magnitude of the displacement. Example, child does a work when he drags a toy car on the ground. ठीक है, एक बच्चा अगर टॉय कार को खींचता है, ड्रैग करता है, मतलब वो फोर्स अप्लाई कर रहा है और उसके बाद वो कार क्या हो रही है, आगे चल रही है, डिस्प्लेस हो रही है। इट मीन्स ही हैज डन वर्क ऑन दैट कार। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 इज नेक्स्ट पॉइंट इज डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन एंड डिस्टेंस। द डिस्प्लेसमेंट मीन्स मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। ठीक है, इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच में जो मिनिमम डिस्टेंस होता है, दैट मिनिमम डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड, मिनिमम डिस्टेंस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। ओके, this is point A, this is point B. If you went from point A to point B like this, and that is 7 kilometer distance to travel, but if you go directly like this from point A to point B, it is 5 kilometer only. So which is the minimum distance? Minimum distance is 5 kilometer. Okay, but you travel 7 kilometer, so 7 kilometer it is the actual path which you have traversed. So this 7 kilometer is called distance, that is the actual path which you have traveled, and minimum distance between initial and final position is called displacement, that is 5 kilometer. Okay, if you again come back to point A, so your point A is only initial point and point A is only also final point, यानी point A से आपने स्टार्ट किया था और फिर से point A पर ही आके रुक गए, तो आपका इनिशियल पोजीशन भी वही है और फाइनल पोजीशन भी वही है, तो उसके बीच में डिस्टेंस कितना है, उसी जगह पर आप हो तो डिस्टेंस उसके बीच में कुछ भी नहीं है, ए और ए के बीच में सेम कुछ भी डिस्टेंस नहीं है। इट मीन्स एट दैट टाइम डिस्प्लेसमेंट वुड बी 0। ओके, नेक्स्ट वन इज वेलोसिटी, and the definition of velocity, velocity means speed. Okay, speed but in straight motion. Velocity is defined as the rate of change of displacement. Example, a car running on a straight road has some velocity. Next one is acceleration. It is the change of rate of velocity known as acceleration. ठीक है, acceleration यानी जब स्पीड इंक्रीज करते हैं, दैट इज टू बी कॉल्ड एक्सेलरेशन। ओके, इनिशियली अगर हम 20 किलोमीटर पर हार की स्पीड से जा रहे हैं, अगर हमने उसको 40 किलोमीटर पर हार कर दिया, यानी हमने कितना स्पीड इंक्रीज किया, 20 किलोमीटर का स्पीड इंक्रीज हुआ, दैट इंक्रीमेंट इन द स्पीड इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। एंड डिस्टेंस, सो आई एक्सप्लेन यू राइट नाउ, इट इज द एक्चुअल पाथ और एक्चुअल पाथ लेंथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग इट्स मोशन, यानी एक्चुअल कितना पाथ उसने, कितना डिस्टेंस ट्रेवल्स किया, उसे कहते हैं डिस्टेंस। एग्जाम्पल इज ऑल्सो गिवन। Question number 6, a ball is rolling from point A to point D on a flat and smooth surface. Its speed is 2 cm per second. On reaching B, it was pushed continuously up to C. Okay, एक बॉल है, वो पॉइंट A से लेके पॉइंट D तक जा रहा है, बट पॉइंट A से पॉइंट B तक जब आ रहा है उसकी स्पीड है 2 cm per second. But when it came up to point B, someone has pushed the ball continuously up to point C, then its speed become 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड, यानी जब उसको फोर्स अप्लाई किया गया पॉइंट बी पे आने के बाद उसका स्पीड इंक्रीज हो गया, 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड हुआ, तो बी से सी पे आने के लिए उसने कितना टाइम लिया, 2 सेकेंड। ओके, इट टुक 2 सेकेंड फ्रॉम बी टू सी। व्हाट इज द एक्सीलरेशन, यानी व्हाट यू हैव टू फाइंड,
acceleration, यानी कितना speed increased हुआ है. And how to solve this question? First you will have to write acceleration of point B. Acceleration of ball from point A to B is 0, यानी A से B तक आने तक कोई acceleration नहीं हुआ, कोई speed increase नहीं हुई, 2 सेंटीमीटर constant speed से वो बॉल आ रहा था. बट वो जब B पे आया तो उसके ऊपर फोर्स अप्लाई की गई, someone has pushed the ball, तो उससे वजह से क्या हुआ, it gets accelerated. So formula of acceleration is change in velocity from B to C, यानी जो velocity change हुई उसकी speed change हुई, तो चेंज इन वेलोसिटी मीन्स फाइनल स्पीड माइनस इनिशियल स्पीड. फाइनल स्पीड यानी उसकी लास्ट में स्पीड कितनी हो गई 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो 4 माइनस इनिशियल उसकी स्पीड कितनी थी 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, 2 डिवाइड बाय टाइम टेकन फॉर दिस चेंज, कितना टाइम उसने लिया बी से सी पे आने के लिए, इट टुक 2 सेकेंड, सो डिवाइड बाय 2. ओके, सो एक्सेलरेशन ऑफ बॉल इक्वल टू 4 minus 2, that is 2 divided by 2, so 2 ones are 2, 2 ones are 2, और answer come 1 meter per second square. So this is our final answer. Acceleration is 1 meter per second square. The last question, that is question number 7. In question number 7, numerical examples is given, and question is for the 1000 Newton was applied to stop a car that was moving with a constant velocity. The car stopped after moving through 10 meter. How much is the work done? Okay, so solution, what is given in the question, force of 1000 Newton, so force equal to 1000 Newton. First write what is given. Okay, after that what else are given, 10 meter distance, so distance we write as distance equal to 10 meter, and how much work done, we have to find work, that is W we have to find. The formula of work is equal to force into displacement. Okay, so force is 1000 Newton into displacement is 10, so 1000 tens are 10,000, but unit of work is joule. Okay, so work done equal to 1000 joule. Next question, this is the last question. A cart with mass 20 kg went 50 meter in a straight line on a plain and smooth road when a force of 2 Newton was applied to it. How much work was done by the force? So what is given, mass is 20 kg. Okay, so M equal to 20 kg, went 50 meter means कितना distance ने travel किया, S equal to 50 meter, and how much force applied on that, force equal to 2 Newton. 2 Newton was force of 2 Newton was applied to it. How much work was done by the force? So again we have to find work here. So again we will use same formula, work equal to force into displacement. So force is 2 Newton and displacement is 50 meter. So 2 into 50, that is work equal to 50 to the 100 joule. Okay, if you got the concept, if you understand it, then please give like and subscribe our channel and forward to others. In our next video we will see how to solve the exercise of lesson number 8. Thank you very much for watching this video till the end.